Good morning, my dear students. Today we will see frequency modulation. Frequency modulation is defined as the process by which the frequency of a high frequency carrier signal is varied in according with the instantaneous value of the message signal. That means आमे जो कैरियर सिग्नल को ट्रांसमिट करूछु सेही कैरियर सिग्नल रो फ्रीक्वेंसी को चेंज करिवा कहा सहित तुलन रे इंस्टांटेनियस वैल्यू ऑफ द मेसेज सिग्नल और ओरिजिनल सिग्नल रो जो इंस्टांटेनियस वैल्यू थिबो एम्प्लीट्यूड थिबो ता सहित तुलन रे आमे फ्रीक्वेंसी को चेंज करिवा कैरियर फ्रीक्वेंसी रो कैरियर सिग्नल रो बट सेटा को आ जाय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ओके आमे वेवफॉर्म तैयारी करिवा. So next we have to draw the waveform of the FM wave, frequency modulation wave. This is our message signal. M of t is here. This one is your M of t message signal. This is our carrier signal. Carrier signal is having high frequency. सेति में गोटे साइकिल रे अधिक थर एटा हेची फ्रीक्वेंसी अछि. नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ revolutions is larger than your message signal. Okay, so frequency modulation रे कौन हुए देखो जो समय रे एम्प्लीट्यूड टा हायर थिबो हमर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल एटा होची हमर कैरियर सिग्नल रो फ्रीक्वेंसी टा चेंज हिजिवो ता माने एटा 1 2 गोटे ये कंप्लीट साइकिल रे जो हाफ ये रे अछि ता माने 1 आउट 2 टाइम्स आसी जी. सो एटा केते थरा 1 2 3 4 ता माने एटा इंक्रीज हला कि नाही. सो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी हैज इंक्रीज्ड. सो फ्रीक्वेंसी हमर एटी चेंज हला. सिमिलरली नेगेटिव साइड रे मध्ये कोन होई छी नेगेटिव साइड रे फ्रीक्वेंसी टा कमी जाउछ. गॉट इट. सो फ्रीक्वेंसी टा नेगेटिव साइड रे कमी छी. दिस डिपेंड्स ऑन द सर्किट ऑफ द एफएम. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रो जो सर्किट अछि ताहा ऊपर डिपेंड करूची जे पॉजिटिव रे से बढ़िबो कि कमिबो. कोको सर्किट रे कमी मध्ये जाय. But frequency is changed. Since frequency is changing, so we call this modulation as frequency modulation. Okay. Next is your frequency deviation. What is frequency deviation? Frequency deviation is the change in maximum frequency to the frequency of the carrier signal. F max minus Fc or Fc minus F min. कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेटा को आ जाए फ्रीक्वेंसी डेविएशन माने फ्रीक्वेंसी केते चेंज हला मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जेते माइनस हमरो कैरियर फ्रीक्वेंसी सेटा आसी जीवो फ्रीक्वेंसी डेविएशन. नेक्स्ट इज आवर मॉड्यूलेशन इंडेक्स. Modulation index is the ratio of maximum frequency deviation. Frequency deviation पढ़िथिबा तो maximum frequency deviation to the modulation frequency, modulating frequency जोटा माने हमरो message signal रो frequency थिबो सेटा. So हमरो modulation index beta is equal to maximum frequency divided by modulating frequency. Okay, आउ amplitude modulation रे केमति थिला mu equal to am by ac थिला. Next is our frequency spectrum. Frequency spectrum माने एटा हमर frequency and this one is corresponding to its amplitude value. So this is the carrier frequency. Carrier frequency रे higher amplitude रहे तापर fc plus fm रे आउट टिके कमी जीवो. Similarly fc minus fm रे सेम रहे ये दुईटा रो amplitude समान हेबो. Next is one fc plus twice fm and here fc minus twice fm ये दुईटा रो amplitude समान रहिबो. Similarly fc plus 3 fm and here fc minus thrice fm ताहारो एम्प्लीट्यूड मध्ये समान रहबो. अब एटा केते जाय जीवो एटा इन्फिनिटी जाय जीवो. सिमिलरली एटा माइनस इन्फिनिटी जीवो. गॉट इट. ता माने एथरे जो साइड बैंड आमे पाइबु एटा इनफाइनाइट टर्म पर्यंत रहिबो. सो इन दिस केस वी विल गेट हायर एम्प्लीट्यूड वैल्यू. गॉट इट. सो दिस modulation is most efficient. Next is our advantages of FM, frequency modulation over amplitude modulation. What is it? Advantages of amplitude modulation over amplitude modulation. First one is this one is highly efficient. Why highly efficient? Because we are considering more number of amplitudes corresponding to the frequency.
हाँ जेमती एठी आमे कहिथिले मोर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रे कोन एम्प्लीट्यूड गुडा को पाइजु तो आमको जोटा सिग्निफिकेंट वैल्यू भावरे जानिबा को हबो सेते पर्यंत एटा एफसी प्लस ट्वाइस एफएम नैची तो एफसी प्लस 3 भी हबो एफसी प्लस 5 और द एफसी प्लस 10 एफएम मध्य होई पारिबो जदी हमको सिग्निफिकेंट बोली लागिवो तार एम्प्लीट्यूड जदी कंसिस्टेंटली बोली लागिवो जोटा कि हमको नेबा कथा ताहेले सेटा हमें कंसीडर करिवा सो हियर this one is highly efficient. Next one is your amplitude limiter can be used to reduce the amplitude of the noise. ता माने we can use amplitude limiter. Amplitude limiter is one of the device. Okay, सेटा हमें यूज करके कौन करि पारिबो to reduce the amplitude of the noise. काहे कि because in this case in FM wave we are getting amplitude of same level आमे जोटा कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल जोटा हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल यूज करूछु ताहार एम्प्लीट्यूड एसी नउछु जदी किछि मात्रा रे अधिक मात्रा रे तमरो नॉइज पळे आछि देन इट विल बी डिडक्टेड बाय यूजिंग एम्प्लीट्यूड लिमिटर यूज करिकि सेटा को हमें रिड्यूस करि परिबा सो इट इज बेनिफिट्स फॉर अस नेक्स्ट वी कैन यूज द गार्ड बैंड is used so that signals will not interfere with each other. What do you mean by guard band? Guard band होची हमरो जोटा कि बाउंड्री लिमिट रे दिया जाए सपोज मु ट्वाइस एफएम पर्यंत लेली गॉट इट ट्वाइस एफएम ताले मु एठी गार्ड बैंड गोटे यूज कर देबी एठी आ एठी गोटे गार्ड बैंड यूज कर देबी आउ गोटे चैनल रे पुणी आउ गोटे करबी ता माने ये गार्ड बैंड टा कोन ये जो चैनल टा जीवो आ ये जो वेव टा सिग्नल टा जाउची देटा चैनल और दुईटा सिग्नल टा जाउची दुईटा सिग्नल भितर आ इंटरफेयर हेबेनी इंटरसेक्ट करिवेनी जो द्वारा कि नॉइज आउ आसीबो नाही बट इट वी विल नॉट गेट द नॉइज ड्यू टू बाय यूजिंग ऑफ द गार्ड बैंड इन केस ऑफ एफएम वेव नेक्स्ट वन इज योर in FM wave FM in frequency modulation it does not depend on modulation index greater than 1 or not कहीं कि हमरो म्यू इज इक्वल टू इन एफ एम एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन रे कोन होतिला इफ म्यू ग्रेटर देन 1 देन वी आर मिसिंग सम सिग्नल्स जोटा को हमें डिस्टॉर्शन कहू बट इन केस ऑफ एफएम वी आर नॉट गेटिंग लाइक दैट हां सेटा हमको हुए नी ता माने मॉड्यूलेशन इंडेक्स जेते अधिक हेले भी हमको किछि प्रॉब्लम नाही इट डज नॉट डिपेंड ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स मॉड्यूलेशन फैक्टर नेक्स्ट वन इज योर इन एफएम स्पेस वेव प्रोपागेशन इज यूज्ड जेहेतु एफएम रे स्पेस वेव प्रोपागेशन टा यूज हुए स्पेस रे हमरो मैक्सिमम यूज हुए सो इट्स रेडियस ऑफ कवरेज इज मोर ता माने एटा बहुत दूर दूर जाय हमरो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टा यूज हेई पारे कवरेज टा मोर ऑलराइट नेक्स्ट इज सम डिसएडवांटेज ऑफ एफएम ओवर एएम दैट इज चैनल रिक्वायर्ड इन एफएम इज 10 टाइम्स वाइडर देन एएम जो चैनल माने हमरो जो मीडियम टा अछि गोटे मीडियम जेते ताहार वाइड थिबो इन एएम रे ताठू 10 गुना अधिक दरकार हेबो एफएम रे व्हाई काहे कि ना सेठी केवल लोअर साइड बैंड आ अपर साइड बैंड दीटा देखा दिए तो चैनल विल बी वेरी नैरो व्हेयरएज इन एफएम आमे कोन एठी आमे 10 टा पर्यंत भी आमे नै परिबा सेति पई हमरो चैनल टा बढ़ी जीवो व्हेयरएज इन एएम केवल दीटा हुए तो दीटा हला माने एटा सब कटि जाउची जेहेतु कटि जाउची आमे हमरो चैनल को छोटो करि परिबा नैरो करि परिबा सो एटा 10 टाइम्स वाइडर देन एएम हुए गॉट इट नेक्स्ट इज आवर सर्किट डायग्राम इज कॉम्प्लेक्स because we are using amplitude limiter guard band all we are using here so circuit diagram is very complex since circuit diagram is complex so it is very costly okay next is your bandwidth what do you mean by bandwidth higher frequency minus lower frequency higher frequency minus lower frequency so here we will consider maximum frequency आमे कौन करि परिबा twice n fm got it twice n fm आमे नहीं परिबा minus एटा होची bandwidth got it आमे हमरो जदी fc it is like this fc plus n fm minus fc minus n fm yes or no जदि आमे
एटा एन जदि नहीं जीवा जोटा भी गोटे एन इज द सिग्निफिकेंट डिजिट इन व्हिच वी विल गेट द एम्प्लीट्यूड बेस्ट ओके ताहले एन जेतु नवा एफसी प्लस एन एफएम हबो हायर फ्रीक्वेंसी माइनस दिस वन इज योर लोअर फ्रीक्वेंसी सो एफसी विल कैंसल एंड वी विल गेट this one minus minus plus so this is twice n fm in am the bandwidth is twice fm एठी केते होची twice n fm तो एठी हमरो n टा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हिसाब रे एठी हमें यूज करूचे ओके दैट्स ऑल थैंक यू